Good morning. Good Oh, morning, ma'am. good morning, How ma'am. are Good you, morning, ma'am? ma'am. I'm good. How are you? Yes, ma'am. Fine, Fine, ma'am. fine. Good to know. Okay. Okay. So uh, I'm so sorry I couldn't join on Saturday and Sunday. Then not on Sunday and Monday. I got busy last minute and then I couldn't join. So Okay, ma'am. No issue, ma'am. It's our lifetime class, ma'am. okay. So should we read something then? Sorry, ma'am. Should we read something today? Yes, yes, ma'am. Okay. Let's see. Is there any specific thing we want to talk about? No, ma'am. It's a general Okay. Okay. discussion, ma'am. Okay. Then let me see. Sharing my screen. Okay. Okay, so today we'll we have less people. So what we'll do is like let's read something and then we'll discuss what is the meaning of that. Okay? Okay, ma'am. Okay, so Pankaj or Naveen, who wants to go first? Or Surendra, whoever wants to go first. We have to Yes, read. Surendarji, please continue, Surendarji, because you will join till 6:30 only. Surendarji. Okay, sir. Okay, let me see if I can make this bigger. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you, ma'am. I have myself full confidence that if all do their duty, if nothing is neglected, and if the 1 minute, best arrangements are made as they are being made, we shall prove ourselves once again. Actually, some problem is seen on the screen, so yes. Able to defend our island home, to ride out the storm of war, and to outlive the menace of tyranny if necessary for years, if necessary alone. At any rate, that is what we are going to try to do. That is the resolve of His Majesty's government, every man of them. That is the that is the will of Parliament and the nation. The British Empire and the French Republic live together in their cause and in their need. Will uh, defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades to the utmost of their strength, even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or many may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule. We shall not flag or fall. We shall go on to the end. We shall fight in France and shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing
confident and growing strength in the air. We shall defend our islands. Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches. We shall fight on the landing ground. We shall fight in the field and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender, and even if which I do not for a moment believe this island or a large part of it were sub, uh, subjected and starving then our empire beyond the seas, armed and guarded by the British fleet, would carry on the struggle until in God's good time the new world with all its power and might step forth to the rescue and the liberation of the old. Okay, very good. Um, yeah, I think most of the words you said were correct. Just in the second part, some of the words were like one of them was subjugated. Yes, 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 So yes. just trying to find. Okay, okay. Let's look at some words. Anybody knows the meaning of menace? Menace Menace. means we will time like that. Pura like. So, yes, so you're close. So menace means when someone is a harm. जब कोई हमें uh, खतरा होता है. तो Yes. so they're saying कि to outlive the menace of tyranny. Tyranny का मतलब किसी को पता है? Tyranny कुछ जगह tyranny भी बोलते हैं, tyranny भी बोलते हैं. Anybody? Tyrant means like Tanasahi this type. हाँ, can you repeat that? Tanasahi. हाँ, मतलब जब हाँ, you're right. मतलब जब जब कोई बहुत पावर, जैसे नाजीज थे ना, Yes, क्रूअल yes. क्रूअल एंड ओप्रेसिव गवर्नमेंट जब होती है, तो उसको कहते हैं. तो ये वही कह रहे हैं कि अगर हर कोई अपना काम करता है, like if all do their duty and nothing is neglected, and if the best arrangements are made, we shall prove ourselves once again to be able to defend our island home. तो ये जहाँ की जिसने भी लिखा है वो बात कर रहे हैं कि उनका एक घर, एक आइलैंड होम है, एंड दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द menace of tyranny. So फर्स्ट पैराग्राफ ये कह रहा है. उसके बाद they're just talking about their country, and then the British Empire and the French Republic, linked together in their cause and in their need, will defend to the death their native soil, aiding each other like good comrades. Comrades का मतलब Uh, Sati. हाँ. So comrades to the utmost of their strength. Even though large tracts of Europe and many old and famous states have fallen or may fall into the grip of Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail. Odious का मतलब किसी को पता है? Not even odious means like not even odious Bisam type is Bura Bura like that हाँ, Bisam. मतलब extremely जैसे जब हमें किसी चीज से चिढ़ होती है ना, रिपल्शन पता है? रिपल्शन No. तो इसी का एक सिनोनिम है कि एक मिनट, इधर जाना पड़ेगा मुझे. हाँ, बट जो आप बोल रहे हो सही बोल रहे हो. मतलब लेकिन जैसे जब हम डिस्गस्टिंग सुना है किसी ने, जब हम कहते हैं वी आर डिस्गस्टेड, जो चीजें Yes, हो रही हैं, this the हाँ, तो वो वैसा ही मतलब होता है इसका भी.
We shall go to the end. We shall fight in France. आई थिंक बाकी तो वर्ड्स इजी हैं इसमें. मैं दूसरा अब ओपन वो खोलती हूँ पैराग्राफ पढ़ने के लिए. Okay, I'm sharing my screen. ठीक है, अब कौन पढ़ना चाहता है? यहाँ से स्टार्ट करना है. नवीन, खुशी, दिव्या, आर्यन. आर्यन, आपको पढ़ना है? Aryan, Aryan, Once please more, continue. many great inventions are greeted with religiously and disbelief. The invention of the aeroplane was no expectations. Although many people who heard about the first powered flight on December 17, 1903 were excited and impressed. Others reacted with peals of laughter. The idea of flying an aircraft was repulsive. repulsive to some people. Some people called Wilbur and Orville Wright the inventors of the first flying machine. Im- Impulsive fools. Impulsive fools. Negative reactions, however, did not stop the Wrights, impelled by their desire to succeed. They continue their experiment in every aviation. Orwell and Wilbur Wright had always had a compelling interest in Hmm. mm, Aeronautic. कहाँ पे हो तुम? Compelling interest in aeronautics and mechanics. aeronautic and mechanics. As young boys, they earned money by making and selling kits and mechanical toys. Kites. Later, they designed a newspaper folding machine, built a printing press, and operated a bicycle repair shop. In 1896, when they read about the death of Otto Lilienthal. Lilienthal, the brothers' interest in flight grew into compulsion. Lily Thandal, a pioneer in hand gliding, had controlled his glider by shifting his body in the desired desired direction. This idea was repellent to Wright brothers, however, and they researched for more efficient method to control the balance of airborne vehicles. In 1901, the Wright brothers tested
numerous gliders and developed control techniques. The brother inability to obtain enough lift power for the glider almost led them to abandon their efforts. After further study, Wright brothers conclude that the published table of air pressure on curved surface must be wrong. They set up a wind tunnel and began a series of experiments with model wings. Because of their effort, the old table was replaced in time and replaced by the first reliable figures of air pressure on curved surface. This work in turn made it possible for them to design a machine that would fly. In 1903, the Wright brothers built their first aeroplane, which cost less than $1,000. They even designed and built their own sources of propulsion. Propulsion. Propulsion salted widely before taking off. The plane managed to stay aloft for 12 seconds, however, and it flew 120 feet By by 1905. The Wright brothers had perfect the first aeroplane that could turn, turn, circle, and remain airborne for half an hour at a time. Others had flew in balloons or in hang gliders, but the Wright brothers were the first to build a full-size machine that could fly under its own power. Has the contribution of one of the most outstanding ingenious achievements in history. The Wright brothers are accurately called the fathers of aviation. गुड, वेरी Aviation. गुड. अच्छा आर्यन, आपको समझ आया ये किस चीज के बारे में? About the aeroplane. Yes. Um, So, so who invented airplanes? the Wright brothers. Yes. So it's about the story ki how they did that, and so like so some of the few things आर्यन, जैसे जब dates पढ़ते हैं ना, तो ये यहाँ पे है, जैसे ये वाला पार्ट है, जैसे फ्लाइट ऑन December 17, 1903. जैसे यहाँ पे है, इसको 19 नहीं पढ़ेंगे, इसको 1900 पढ़ेंगे, इसको 1901 पढ़ेंगे. जब भी ईयर पढ़ते हैं ना, जैसे 2000 है, वैसे ये 1900 है, 1900 के बाद 2000. तो ये ध्यान रखना कि पूरा बोलते हैं जब भी डेट पढ़ते हैं. उसके Okay, बाद 19, 19, हाँ बस. 1900. हम्म. उसके बाद जैसे राइट जो है ना, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट होता है. जैसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, और हम लोग अभी किसी दिन ये वर्ड्स डिस्कस करेंगे. जैसे हमने किसी दिन एक पैसेज पढ़ा था जिसमें जार था, CZAR, तो उसमें सी साइलेंट था. वैसे ही राइट में क्या होता है, RIGHT और WRIGHT दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो डब्ल्यू बोलेंगे ही नहीं इसमें, बस राइट. Right. Oh, ओके, अब हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं. रिडिक्यूल का मतलब um, mm, जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं. रिडिक्यूलस, रिडिक्यूल लाइक जैसे क्लास में किसी भी बच्चे को कभी कभी पकड़ करके जबरदस्ती उसका मजाक बना देते हैं, तो वो रिडिक्यूल करते हैं. रिडिक्यूलस
एक वर्ड जैसे रिडिक्यूल से रिडिक्यूलिस वर्ड होता है, तो तुम लोग बहुत सुनोगे आगे जाकर के, बहुत कॉमन वर्ड है रिडिक्यूल। फिर डिसबिलीफ का मतलब, बिलीव ना करना, हाँ, कि विश्वास। भरोसा ही नहीं होता है इस चीज पे। तो ये पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है आर्यन, समझा दो सबको। हम कुछ इन्वेंशंस ग्रीटेड ग्रीटेड मतलब ना जो बहुत बड़े ग्रेट इन्वेंशन है ना, ये लोग इन दोनों वर्ड्स को कैसे यूज कर रहे हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेंशन है ना, वो ज्यादातर मजाक और मतलब ना डिसबिलीव भरोसा ना करते हैं, डिसबिलीव मतलब भरोसा नहीं करते और मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे क्लास में तुम्हारे पास कोई आइडिया आया और तुम जैसे अपनी टीचर को जाके बता रहे हो, और वो तुम्हारी बात मान नहीं रहे हैं, मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो ये मतलब है। ये दोनों वर्ड्स लिख के याद कर लें सब लोग। उसके बाद इन्वेंशन का मतलब पता है सबको? यस मैम, आविष्कार। यस, वेरी गुड। फिर इम्प्रेस्ड, इंटरेस्ट। जब हम इम्प्रेशन जमाते हैं किसी के ऊपर, जैसे जब हम पहली बार इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं क्योंकि हम अपना इम्प्रेशन अच्छा देना चाहते हैं, तो वहां से इम्प्रेस्ड वर्ड आता है, जब कोई इम्प्रेस हो जाता है। अच्छा, एक और चीज मैंने ध्यान दी थी आर्यन, तो जब आप रीड कर रहे थे, तो जैसे रीड था कहीं पे, तो जैसे आपको ये पता है कि जैसे जब जब अभी कुछ हो रहा होता है तो वो प्रेजेंट टेंस होता है, जब कुछ पुराना हो चुका होता है तो वो पास्ट टेंस पास्ट। होता है। हाँ, तो कहीं पे भी हम लोग रीड करते करते पहुंचेंगे, लेकिन रीड लिखा था, मतलब रेड होना चाहिए था कि ही रेड, बट आपने रीड पढ़ा था, तो अभी हम लोग उस पे जाएंगे। बस इस चीज का सबको ध्यान रखना है कि जब भी हम रीड पढ़ रहे होते हैं, हमें टेंस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, अभी हम लोग रिपल्सिव वर्ड का के बारे में ही बात कर रहे थे। रिपल्सिव वर्ड देखिए आ गया है, किसी किसी को मतलब समझ आ रहा है इसका? रिपल्सिव, the idea of flying an aircraft was repulsive to some people. मतलब जैसे, पसंद हाँ, पसंद नहीं आना। क्लोज है बट एकदम करेक्ट नहीं है। और क्या लगता है? मैम, नो वन इज आंसरिंग। Yes, why is no one answering? खुशी, पंकज, नवीन। रिपल्सिव का मतलब? मैम एक्चुअली रिपल्सिव डेट मीन्स की मतलब पीछे हट पैशन होता जाना। है, पैशन। रिपल्सिव मतलब नो, पसंद नहीं रिपल्सिव आना, मीन्स रिपल्सिव। पैशन, सम बिग। हाँ, रिपल्सिव मतलब कि जब किसी से चिढ़ मचती है, रिपल्शन होता है। जैसे कभी कभी हम किसी किसी इंसान से मिलते हैं और हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है उनसे मिलके, या जैसे कि अगर कोई वेजिटेरियन है, ठीक है, तो उसके लिए मीट क्या होती है, उसके लिए मीट रिपल्सिव होती है। मतलब रिपल्सिव मतलब चिढ़ मचना, दूर जाना उस चीज से, तो कोई वेजिटेरियन मीट नहीं खाएगा, वही तो वो रिपल्सिव होता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो आइडिया था प्लेन उड़ाने का, वो कुछ लोगों को रिपल्सिव था, मतलब चिढ़ थी, मतलब उनको पता, इनको भरोसा ही नहीं था, विश्वास नहीं था, और उनको लग रहा था कि कभी हो ही नहीं सकता है, तो वो उसके अगेंस्ट पुश कर रहे थे। तो उसके बाद ये जो दो भाई थे, विल्बर एंड ऑरविल राइट, ये इन्वेंटर्स थे फर्स्ट फ्लाइंग मशीन के। कह रहे नेगेटिव रिएक्शन हुए थे बहुत सारे लोगों के, लेकिन नेगेटिव रिएक्शन से वो रुके नहीं। इम्पेल्ड का मतलब? What name? इम्पेल्ड, प्रेरित होना। प्रभावित होना मैम। हाँ, प्रभावित प्रभावित होना। होना। हाँ, हाँ, प्रभावित, प्रेरित। तो वो लोग प्रभावित थे, प्रेरित थे अपने इस फैसले से, मतलब उन्होंने ठान ली थी कि प्लेन तो हमें उड़ाना ही है,
चाहे नेगेटिव रिएक्शन मिले, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे लोग भरोसा नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपना दिमाग बना लिया है, हम इम्पेल हो चुके हैं इस चीज से। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू रखे। उसके बाद देखो, इम्पेल्ड से ही मैचिंग वर्ड है कंपेलिंग। किसी को तो देखो, कंपेलिंग का मतलब सम्मोहक पता है किसी को? नहीं, कंपेलिंग, ये सम्मोहक हो जाना किसी वर्क के प्रति मैम, As like सम्मोहन होना, attraction. हाँ, कंपेलिंग द एग्जैक्टली। वर्ड, ही इज कंपेलिंग द हिज वर्क, वो अपने हाँ, काम से सम्मोहक हो जाए। कभी कभी हम कंपेल हो जाते हैं कुछ चीजें करने के लिए, कन्विंस हो जाते हैं। कंपेल जैसे कि अम, मतलब जब हम किसी चीज को हम मना नहीं कर पाते, रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, वो मतलब है कंपेलिंग का। कंपेल, कंपेल मीन्स मजबूर होना होता है मैम, मजबूर हाँ, होना। मजबूर होना, राइट। फिर अच्छा, जब भी हम प्लेन्स की बात करते हैं, जैसे कि हमने वो मीटियोरोलॉजिस्ट पढ़ा था, मीटियोरोलॉजी होती है कुछ भी जब हम वेदर फोरकास्ट इन चीज से। एक्सप्लोर करते हाँ हैं जब हम वेदर की स्टडी करते हैं। हाँ, इट्स गुड, वेरी गुड। तो वैसे ही एरोनॉटिक्स क्या होता है कि जब किसी भी एयर, जैसे प्लेन हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, जो भी कुछ हवा वाली चीजें मैम एयर होती की है। स्टडी, हाँ, एयर की स्टडी क्या आ रही है? मैम, अच्छा, मुझे एक्चुअली आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो एनीवेज यहाँ पे फिर और कौन से वर्ड्स हैं? ये तो ऐसे ही नाम वाम है। पाइनियर पता है किसी को? एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ पाइनियर इन। तो जब भी कोई इंसान हो फर्स्ट होता पायनियर है ना। मीन्स आइकॉनिक होता है, आइकॉनिक। हाँ, एग्जैक्टली। जब कोई चीज नहीं करता है कोई, जैसे बहुत सारे लोगों को हम पाइनियर बोलते हैं। रिपेलेंट, अभी हमने ये यहाँ पे एक वर्ड देखा था, रिपल्सिव। मैम उसका मीनिंग था मैम, अच्छा, तो पसंद नहीं आना। हाँ, करेक्ट। तो रिपेलेंट और रिपल्सिव, इन दोनों के मतलब एक ही होते हैं, तो ये प्लीज लिख लें आप लोग। सेम मतलब होते हैं। द आइडिया वाज रिपेलेंट टू द राइट ब्रदर्स, मतलब उनको पसंद नहीं आया ये आइडिया, उनके लिए सही नहीं था। तो ये दोनों अच्छे वर्ड्स मिले हैं हम लोगों को आज। अबैंडन मतलब मैम छोड़ अबेंडन देना। मतलब वेंडन, हम्म, छोड़ना। छोड़ देना, राइट। अपने बच्चों को अबैंडन कर देते हैं, अपने डॉग्स को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देते हैं। परित्याग भी हो जाता है ना, अबेंडन मतलब परित्याग कर देना, मतलब छोड़ देना बिल्कुल ही। हाँ, बिल्कुल ही छोड़ देना। हाँ, जो मेरे पास अबेंडन, मैंने यूएस आकर के एक डॉग अडॉप्ट किया था, और तो मतलब अभी भी रहता है मेरे साथ वो। तो वो जो डॉग था, वो जो उससे पहले वाले फैमिली के साथ रहता था, तो उस फैमिली ने मेरे डॉग को अबैंडन कर दिया था, सड़क पे छोड़ दिया था उसको। वो बचा कुचा खाना खाता था, उसको बीमारियां हो गई थी। फिर जाकर के मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो अबैंडन को ऐसे याद कर लो कि जब छोड़ देते हैं कोई। आई थिंक और कोई वर्ड्स किसी को समझ आ रहे हैं? मुझे तो लग रहा है और तो मैम इजी। हाँ, मैम ऊपर था हूँ। प्रोपल्शन, यस मैम, बोल के सुनाओ पहले। प्रोपल्शन। हाँ, करेक्ट। तो अच्छा, कभी जैसे वो देखा है प्रोपल्शन का, मैं सब मतलब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कभी वो देखा है स्पेस, जैसे स्पेस में वो जो मिसाइल जाती हैं, तो मिसाइल जब एकदम से प्रेशर लगा के ऊपर की तरफ जाती है ना, तो वो जो
जो प्रेशर और फोर्स मैम लगती है ना। हाँ, जो ना वो न्यू स्पेस में कैसे जा सकते हैं? क्या 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 क्या? मैम जो वो न्यूक्स से होते हैं वो स्पेस में कैसे जा सकते हैं? वो तो स्काई में ही रहेंगे। क्या न्यूक्स क्या स्पेस में कैसे जाते हैं? मैम वो स्पेस में कैसे जा सकते हैं न्यूक्स वही जो तो बम होते हैं? फ्यूल से होते हैं, जैसे कि हमारे पास वो होते हैं ना, जैसे स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं। रुको, मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। हाँ, रॉकेट कैसे? तो देखो, जैसे मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। प्रोपेल्सन होता है आगे बढ़ाने की तकनीकी होती है, जो आगे बढ़ाएगा कुछ किसी यंत्र को। हर उसमें मरीन में भी लगता है प्रोपेल्सन सिस्टम लगता है, हाँ, प्रेषक शक्ति होता है एरोप्लेन में लगता है संचालन। प्रोपेल करना, जो नचा करके हाँ, घुमा करके आगे बढ़ाता एक प्रोपेल्सन जो बढ़ाने की शक्ति होती है उसका कुछ। एग्जैक्टली हाँ। तो जो जो फोर्स लग के वो जब ऊपर जाता है ना, तो वो उस फोर्स या उस प्रेशर को कहते हैं। तो अब ये देखो, मैं ये एक मिनट स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आर्यन, तो तुम्हें समझ आएगा ये। आर्यन इज मच क्यूरियस अबाउट प्रोपेल्सन। यस, तो देखो क्या होता है कि स्पेस प्रोपल्शन ऐसा कुछ होता है। तो जब भी कोई चीज लिफ्ट करती है ना नीचे से ऊपर, तो ये जो है मतलब जो ये फोर्स होती है, जो थ्रस्ट, तो इससे हम एक और वर्ड थ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट, प्रेशर, फोर्स। लेकिन ये क्या होता है कि यहाँ ये लोग फ्यूल यूज करते हैं। उस फ्यूल से क्या होता है कि एकदम से थ्रस्ट लगाकर, मतलब फोर्स और जो फ्यूल होता है दोनों को मिक्स करके क्या होता है कि नीचे से उसको एक प्रेशर लगता है और फिर वो ऊपर जाता है, तो वो प्रोपल्शन होता है। वेरी गुड वर्ड आर्यन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। सिर्फ आर्यन ध्यान दे रहा है सबसे ज्यादा आज। नो नो मैम, आई एम आल्सो, but but now Aryan is Aryan is learner na, man. He is always learn new things. He has good knowledge about also in science also. He want to become a astrophysicist, so he's always read new things in Wow, a sky. very nice. When I was a kid, I wanted to be an astronaut, like like Kalpana Chawla. And so like I used to read her interviews. सुनीता I विलियम्स। huh? He is also Yeah, yes. There are so many people. Yeah, space is fun. So like now I follow. Have you guys heard about Elon Musk? Yes, ma'am. So he, he's working. So this is He what, has space company. huh? Yes, company है। Yes. So टेस्ला, he's trying to take us ब्लू, all to Mars. He's trying to create a house for everyone on Mars, and his company name is SpaceX. So पिक्सेल्स। yes, so like he does the same things. Like very recently, he sent a rocket, like a spaceship, to the orbit. He entered it to the orbit. Then he has so many things. He's the owner of Twitter. He has his Tesla. Have you guys heard about the car Tesla? Yes, ma'am. What is special in Tesla? And it runs on electricity. Yes, correct. It runs on Uh, electricity, and the second thing is that it is also a self-driving car. That means you don't have to drive it driver. on your own. It drives everything. So that's how the car looks, and it drives everything on its own. You just have to put it on automatic mode, and then it takes right, left, it stops. It does everything on its own. So this guy Elon Musk is like very famous for these things. So he has his car, he's got SpaceX. Then he recently bought Twitter. Do you guys know about Twitter? Yes, ma'am. It's a social media thing where people post mm, things. yes, yes. So just like Instagram, Facebook, we've got Twitter. So like we call these
tweets when people write small things. It's called like tweets and stuff. So, anyways, just about Elon Musk. Okay, how much time do we have? 15 minutes? Yes, ma'am. 15 minutes. 15. Okay, so should we do another reading? Do we have? Yeah, we can do one more. Or do we want to talk about something? We can talk about some interesting thing and see photos and videos. We can do that. Ma'am, readout will be good now. Readout? Okay, let's do a readout No. then. Uh, okay, sharing my screen. Okay, let's see. Okay, Pankaj, do you want to go first or Naveen? Who wants to go first? I mean, anyone can go today. We just have one time for one. Yes, Pankaj I sir, can. please continue, Yes, sir. Yes, yes. yes, Khushi, ma'am. you can continue. Yes, Khushi, Okay, please. sir. If there were only one aspect of language that the students could study or the educator could teach, it would invariably be reading comprehension. Beloved reading comprehension, a friend to nearly every teacher of language. But what makes it so special? Why is it so revered by both student and teacher alike? To answer this question, it helps to know just what reading comprehension is. Reading comprehension is defined as the level of understanding of the text. Then the understanding comes from the interaction between the words that are written and how they trigger knowledge outside the text. Humans are thought to have a set reserve and established threshold for attention and absorption of information, commonly referred to as processing capacity. This being the case, it is generally believed that proficient reading depends on the ability to recognize words quickly and effortlessly. If words recognition is difficult, students use too much of their processing capacity to reading individual words, which which inter which interferes with their ability to comprehend what is read. Many educators in the United States Uh, believed this. Kushi, 1 second. So, what is red? Aryan, I stopped here because I wanted to point this out to both of you. So, we have to ensure that we are using the correct tense. So, this one should be read and not read. Okay, continue now. Okay. Many educators in the United States believe that a student needs to learn to analyze text even before that they can read it on their own, and Comprehension, instructions generally begin in pre-kindergarten or kindergarten, but kindergarten. other US kindergarten, but other US educators consider this reading approach to be completely backward for your young children, arguing that the children
that the children must learn how to decode the words in the story through phonics before they can analyze the story itself. The reason why reading comprehension is such an effective learning tool is that, like art, it teaches students to manipulate particular in attempts to represent the universal. When a student reads a text, he or she is forced to absorb a great deal of particular facts concerning an infinite infinitude of of seeming random subjects, and assimilate them into a bigger picture, establishing just how they fit in or relate to a broader world. Mathematics, mathematics, the diametrical opposite of art, challenge student in an inverse way. It teaches them to manipulate universals in order to represent the particular. No matter what the number three may come before, volcanoes or molecules or skateboards, the student will be able to manipulate these things given his or her understanding of math. Based on the understanding, one might actually say that reading comprehension shares a unique association with art and math. It's providing a way of understanding the world from a fundamental yet polar perspective. Our reading Yeah, I think this is fine. So this was an easy one, and Kushi, read these three words. volcanoes, Mhm. molecules, and skateboarding. Okay. So other than that, I think all the words that you said were almost correct. Kindergarten, one word. So does anyone know what are kindergartens? I'm very small to study. Very good. Yes. Okay. So we still have some time. Yes, ma'am. So can we discuss something? Yes, one second. I was trying to actually open another one because this one was easy. I don't think there are any. Is there any word that you guys want to go through? The Demetrical Ma'am, and trigger means the start करना. Which word, Kushi? Trigger, trigger. Oh, where is it? In the written and how they trigger knowledge. Uh, is it in the starting? Where is No, it? no. Where First, Yes, ma'am. In yes, yes, ma'am. Knowledge. trigger? Is that the word you're asking? yes, yes, ma'am. Okay. So what do you think is the meaning of this? Start करना. जब कुछ ट्रिगर कर देते हैं, जैसे कभी कभी हम कभी कभी सैड होते हैं और कोई कुछ कह देता है और हम रोने लगते हैं, तो ट्रिगर क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज की वजह से कोई चीज ट्रिगर हो जाती है, जैसे जब हम गन चलाते हैं तो उसमें से जो गोली होती है वो ट्रिगर होती है। तो लाइक एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, सो ट्रिगर इज बेसिकली व्हेन समथिंग इज कॉज्ड, एंड यूजुअली ट्रिगर हम यूज करते हैं कि जैसे किसी की कोई कमजोरी है और हम उस ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमें अगर ये चीज़ हम लोगों को, जैसे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है और कोई मुझे कॉन्स्टेंटली वही चीज़ बोल रहा है, तो उससे क्या होता है कि मेरे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं। तो मतलब जैसे जब हम माचिस जलाते हैं तो उससे आग लगती है, तो हम जब माचिस रब रब करते हैं ना, तो ट्रिगर कर रहे हैं हम किसी चीज़ को, स्टार्ट कर रहे हैं Okay, हम ma'am. फायर को। ठीक है? सो दैट वाज़ राइट।
मुझे मैं कल की क्लास के लिए ढूंढ के रखती हूँ थोड़े से और ये ऑप्शंस पढ़ने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लॉग इन करके मुझे फिर वो करना पड़ेगा पहले से। तो अभी हम और एक दो वर्ड्स और देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, अब हम एक बस 5 मिनट के लिए हम एक ये पढ़ते हैं, एक हम न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं और बस फिर उस और हम लोग रोज कोशिश करते हैं कि एक न्यूज आर्टिकल पढ़ने की कोशिश करें रोज, उससे सब लोग सीखते रहेंगे। तो अगर अभी पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं सुना है, बट अच्छा हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है? 15 अगस्त। हाँ, तो और हाँ, और अच्छा तो अभी आज जुलाई 5 है, तो यूएस का जो वो था इंडिपेंडेंस डे, वो था 4 जुलाई, मतलब कल के दिन था। तो ये याद रखना कि मतलब ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए कि 4 जुलाई को होता है यूएस में और फायरवर्क्स वगैरह होते हैं। तो अभी कल की ही न्यूज है कि एक स्टेट में शूटिंग हो गई है, तो इसी के ऊपर है। अब ये एक पैराग्राफ है, मतलब ये पूरा एक पेज है। नवीन या पंकज, दोनों में से कोई एक शुरू हो जाओ। Ma'am, fourth July is also holiday in USA. Ma'am, यस यस क्या है? यस, What is यस the इट reason? इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, fourth and fifth also. नो, तो आज तो मेरा ऑफिस था, अभी मैंने ऑफिस के बाद ही ज्वाइन की है मीटिंग। फोर्थ थी सिर्फ छुट्टी। तो यहाँ यूएस में क्या, Monday is holiday. मंडे वाज 4th, राइट? सो हमारी सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी थी। Actually, one of my boss joined USA. Actually, I'm just forgetting that. यू आर कटिंग ऑफ। जो मेरे बॉस थे एक लड़के हैं, यूएसए में जॉब मिला है उनको असिक्स मैनेजमेंट का। He is Yale University, he is a study over there. Yale University. Yes, ma'am. Please continue, ma'am. अच्छा, so yeah, so like so I was telling you about the same thing. So like so what happened कि यहाँ पे मतलब अगर आप लोगों ने यूएस के बारे में सुना होगा, तो यहाँ पे जो गन रखना यहाँ पे लीगल है। तो यहाँ पे तुम्हें गन रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना पड़ता है, इजीली लाइसेंस मिल जाता है और बहुत सारे गन शॉप्स होते हैं। तो यूएस में एक सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ क्राइम जो है वो शूटिंग का ही है। सो अभी ऑलमोस्ट 4 हफ्ते पहले अगर आप लोग न्यूज पढ़ोगे तो देखोगे कि यूएस के किसी एक स्टेट में एक 17 साल के लड़के ने गन फायर ओपन कर दिया था। तो उसमें कम से कम नहीं तो 20-25 बच्चों की डेथ हो गई थी और कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो अभी क्या हुआ है कि अभी 4 जुलाई वाले दिन ही ये परेड चल रही थी शिकागो में। शिकागो एक स्टेट का नाम है, और वहां पे शूटिंग हुई थी। तो मैं वही यही थोड़े से वर्ड्स, ये एक पेज पढ़ते हैं कोई भी, या मैं पढ़ती हूँ। A prosecutor called the attack premeditated and calculated. The dead included two parents of a toddler. Prosecutor मतलब जब हम लॉ और इन चीजों की बातें करते हैं, तो जो हमारा जज होता है वो उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो जो अटैक था वो पहले से प्लान्ड और कैलकुलेटेड था। Police officials in the suburban Chicago said they had seized 16 knives, a dagger, and a sword in 2019 from a man who was charged on Tuesday with 7 counts of murder in connection with the shooting deaths at a 4th July parade in Highland Park 3.
Deputy Chief Christopher Covely of the Lake County Sheriff's Office said official has seized the weapons from the man Robert E. Crimo III after a family member told officials in April 29 that he had planned to kill everyone. He was not charged in connection with that incident, but on Tuesday evening, Eric F. Reinhardt, the Lake County's state's attorney, said in a news conference that he had filed seven first-degree charges against Mr. Crimo, accusing him of the 4th of July massacre that shook this lakefront suburb north of Chicago and expected to file dozens of more charges against him in the coming days. Mr. Crimo faces life in prison if convicted, Mr. Reinhardt said, describing the attack as premeditated and calculated. John R. Losh, the U.S. Attorney for the Northern District of Illinois, said the state murder charges were appropriate at the time. He declined to say whether federal charges would be filed in the case, adding that the authorities would continue their investigation. But the details in 2019 weapon seizure, as well as an incident earlier in 2019, in which some reported to the police that Mr. Crimo had attempted suicide, raised questions about how and why he was able to purchase several guns in the years since. तो ये पूरी 4th ऑफ जुलाई परेड के बारे में ही बात हो रही है, तो इसमें मतलब बहुत सारे लोग मरे हैं, बट बेसिकली ये लोग कह रहे हैं कि जो एक सस्पेक्ट इन लोगों को मिला है वो 2019 में भी किसी चीज किसी इंसिडेंट के लिए अक्यूज हुआ था, लेकिन पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया था, और आज आकर के उसने 3 साल बाद पूरा प्लान करके और इतने लोगों की जान ली है। मतलब बहुत सैड सी चीज है, लेकिन यूएस में जैसे मास शूटिंग स्कूल में, और जैसे जो बिजी अभी अभी थोड़े दिन पहले ब्लैक लाइव्स मैटर का इतना ज्यादा प्रोपोगंडा हुआ था, बिकॉज जो न्यूयॉर्क में ही एक छोटा सा टाउन था जहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लैक लोग रहते थे, जो अफ्रीका और इधर जमैका और ऐसी जगहों से आते हैं, तो बेसिकली वहां पे ओपन फायरिंग हो गई थी। तो मतलब ये बहुत होता रहता है और अभी इसका बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो बस तुम लोगों को बताना चाह रही थी मैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। Yes, ma'am. Now 7 p.m. 7 a.m. is ओके ओके, देन आई एम नॉट श्योर कल का क्या होगा, बट मैं आई विल ट्राई टू जॉइन, कोशिश करूंगी मैं, वरना फिर तो वीकेंड्स पे करूंगी मैं। yes, yes, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, Thank you very हैव much. Thank you, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, बाय। Bye, bye, ma'am. हाँ जी सर।